I'm interested in machine learning and web development. 10th में I was in the ICSE board Okay. 94% थे और class Okay. 12th में 95 थे. What were the steps to go in Microsoft to get an internship in Microsoft? Soft Teams application का क्लोन बनाना. उसमें आपका इंटरव्यू है तो what was the question if you can share? अपलोड किया था लिंक्डइन. काफी क्वेश्चंस आए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज. There's a thing, yeah, agile methodology. Which would be best career option? So hi guys, आज हमारे साथ है हर्ष. He has Okay, came so all the way from Microsoft. So let's talk with him. So एक quick introduction के साथ you can start. ओके तो फिर बेसिकली मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका कैंपस से. आई एम इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट. अभी सेकंड ईयर पास आउट हुआ, थर्ड ईयर क्लास शेयर हो. So how did you choose BTech? मतलब after 12th science कि मैं BTech करने वाला. Okay, so like since class 9th only, I was relatively good and like science subject, science, mathematics. So फिर basically वहीं से interest develop और Academically you were good. आप बहुत अच्छे थे. good. Can you share percentages of 10 12 because Yeah, बहुत people sure. they are interested. Class 10th में I was in the ICSE board 94% थे और class Okay. 12th में 95.5. That's huge. ISC. Means 3 people pass हो सकते हैं इसमें. इतना है वो. Satya Nadella also Microsoft का CEO. वो MIT से था. Okay, I Yeah. was not knowing that. So इसलिए is there any connection between? हाँ मतलब लगता तो है लेकिन ऐसे कुछ. Means what were the steps to go in Microsoft to get an internship in Microsoft? Okay, so like since I arrived in the college, पहले हर किसी से सुना था कि इस बच्चे का माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ, काफी एक्साइटमेंट होती थी. तो फिर तभी लगता था बेसिकली कभी सोचा नहीं था एक्चुअल हो पाएगा, लेकिन सोची थी मेहनत तो की जाती. तो फिर इसी सिलसिले में मेहनत स्टार्ट हुई. डीएसए प्रिपरेशन किया क्योंकि आई थिंक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड DSA? कम्युनिकेशन. ओके तो बेसिकली डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. फिर कोडिंग की मैंने क्लास 9 से. आई वाज लाइक यूजिंग जावा. तो फिर आई कंटिन्यू विद दैट ओनली. फिर Okay. अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्राई किया, हैकरैन में किया, जीएफजी में किया और उसके बाद लीड कोड में किया. फाइनल फिर जब ये सारे प्रोसेस होते गए उसके बाद सेकेंड ईयर में एक बीच में चांस मिला. एक टेस्ट था एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए. सीनियर से पता किया था काफी इंटरेस्टिंग है तो फिर उसमें अप्लाई किया. एक टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट था. बेसिकली उसमें ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे, गिट पूछा गया था, वेब डेवलपमेंट. तो फिर ये सब आई थिंक बहुत प्रीटी अच्छा था मेरा, उसमें सिलेक्शन हो गया था. फिर एक महीने की मेंटरशिप मेरे को मिली थी माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय से. उसके Okay, बाद so लाइक one question in between. ये जो आपने वो टेस्ट दिया ये सिर्फ MIT people के लिए या anyone from India can apply? आई थिंक सेलेक्टेड कॉलेजेस के लिए होता है लेकिन उसकी रेंज काफी एक्सपेंसिव है. तो फिर बेसिकली इंडिया काफी कॉलेजेस कवर होते हैं बट आई डोंट थिंक सारे. Okay. तो फिर मेंटरशिप में बेसिकली प्रोजेक्ट बनाना था साथ. हर साल अलग होते हैं क्राइटेरिया. इस बार वेब डेवलपमेंट था, लास्ट ईयर मशीन लर्निंग. तो फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन का क्लोन बनाना था. Okay. तो फिर तो उसके बेसिक्स में एक जिनका बहुत अच्छा होगा उनको डायरेक्ट इंटर्नशिप मिली थी. जिनका उसके बाद उनको एक एचआर राउंड देना था उसके हिसाब से. और उसके बाद कंटिन्यूएशन में जैसे कुछ बच्चों को 3 राउंड देने पड़े थे इंटरव्यू के, टेक्निकल और एचआर, और कुछ बच्चों को शायद नहीं हो भी होगा. तो फिर Okay. उसके बेसिस में इंटर्नशिप. How tough was it? वो जो प्रोजेक्ट था, you have flown literally a teams. So is it tough था? टफ था, काफी चैलेंजिंग था. मैं थोड़ा न्यू था वेब डेवलपमेंट में क्योंकि काफी 1.5 ईयर मैंने मशीन लर्निंग की थी. वेब डेवलपमेंट में शुरू कर दिया था मैंने काम. तो फिर उसके बाद बेसिकली हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं बना था, उसमें क्राइटेरिया था मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए वो सब. बट मुझे मशीन लर्निंग में काफी नॉलेज है तो मैंने उसमें एक फीचर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वीडियो डिस्टॉर्शन करेक्शन, जिसमें कि बेसिकली लो बैंडविड्थ में अगर ऑडियो आ रही है लेकिन वीडियो इनकरेक्ट आती है या थोड़ी डिस्टॉर्टेड आती है यूजर को. सो लाइक माय मॉडल करेक्ट्स दैट और दूसरे यूजर को एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है. तो लाइक दिस वाजंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन टीम, तो आई थॉट इट वाज प्रीटी कूल. तो मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, फाइनली बन गया. टीम में वर्क करना था ये सब? नहीं, इस साल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था. चार का जो राउंड रहा उसमें आपका इंटरव्यू हुआ तो व्हाट वाज द क्वेश्चन इफ यू कैन शेयर? आई थिंक वो बेसिक राउंड था. बेसिकली ये देखने के लिए था, उसमें कोई ऐसे डीएसए का कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया. बस मैं ये देखना चाहते थे कि लाइक आपका थॉट प्रोसेस कैसा है और इफ यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू मशीन लर्निंग बिकॉज मेरी सीवी में प्रोजेक्ट्स काफी तो उससे रिलेटेड. एंड उनके क्वेश्चन ऐसे ही डिडंट आस्क कॉस्ट फंक्शन क्या है या फिर किसी के एल्गोरिथम बताओ. उनने पूछा कि इसका आगे स्कोप क्या है, या फिर जैसे कि अगर हम लोग डेटा इंक्लूड करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो हो सकता है वो जेंडर बायस, तो उसे अनबायस कैसे बना सकते हो. Okay. तो फिर कैसे उसको तुम उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करोगे. Then how was the experience कि you are in a biggest company in the world, Microsoft? तो मतलब काफी yeah, एक्साइटमेंट थी, काफी एक्साइटमेंट थी. मतलब बेसिकली दोस्त लोग ये सुन के खुश हो रहे थे कि काफी स्टाइपेंड मिलेगा, काफी पीपीओ काफी अच्छा है ये सब. आई हैड दिस ड्रीम टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट
ऑफ सिंस स्टार्ट। आई डिडंट नो कि मतलब बीटेक के बीच में कर पाऊंगा, बट एक टाइम पे तो जाना था। उन्होंने मेंशन किया है कि आफ्टर द इंटर्नशिप यू कैन बी आल्सो परमानेंट एम्प्लॉय इन अ कंपनी? या लाइक आई थिंक देयर इज सम क्राइटेरिया, उसके बाद यू कैन गेट इन चांस टू विन द पीपी ऑफर, रिप्लेसमेंट ऑफर, ओके, एंड यू कैन बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या बताना चाहते हो समवन हु इज ट्राइंग टू ग्रैब एन इंटर्नशिप, सो व्हाट शुड दे डू इन कंप्यूटर साइंस? डीएसए मस्ट है। डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डीएसए मस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। लैंग्वेज को मेरे को काफी, मैं जब अपलोड किया था लिंक्डइन, काफी क्वेश्चंस आए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज कर, कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं जावा बहुत टाइम से यूज करता है, आई यूज जावा। आई हैव हर्ड पाइथन इज अ बिट स्लोअर देन सी प्लस प्लस, सी और जावा, बट अदरवाइज यू कैन यूज एनी ऑफ एनी ऑफ इट, ओके। any of them, doesn't matter. Like online test, too technical, one HRM. So फिर they'll just test your knowledge of data structure algorithm, dynamic programming. Like if you are a CSE student or like computer related branch, तो फिर DBMS, system design, OS, networking, ये भी पूछ सकते हैं। Do you earn money right now? So Any source? like yeah, so earning some side amount is pretty good. So yeah, I started doing freelancing in my free time along with one of my school friends. Okay. So there was an option to go online and search for like really big companies who wanted to hire people and work for them. But I actually didn't want to do that. Instead, I went to the local shop owners in my own city, Lucknow. I found that basically people use outdated softwares, or like they still use handwritten bill. So I designed an inventory management program for them and got pretty well. And I think it helped a lot of customers, and I made pretty good amount from that also. A client doesn't want to see the final product. You can't say, give me a time of 1 month and I'll give you the final. If he is paying a big amount for you, then he'll expect you like to know how is it progressing in time. Yeah, right. Yeah, so I learned this in Engage program. There's a thing, yeah, agile methodology, Okay. where we have to divide. If you have a period of 1 month, and we can divide each week as different sprints. So we'll have 4 sprints for 4 weeks. Now we'll develop a web development application which will increase in version. So you Okay. don't have to create the final version, the perfect one. You just have to create a very basic version by the end of 1 week, show it to the client. Then you have to keep on adding features to it, and then creating a version 2.0, version 2.0.1. I think preparation के लिए बस practice important, and the earlier start it's better for you. तो फिर बस कोई भी प्लेटफॉर्म उठा, हैकर, कोड शेफ, कोड फोर्सेस या फिर लीड कोड, और उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करना। नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको टाइम दो, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो किसी से पूछो, या फिर यूट्यूब यूज करो। यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न। Yeah. और बस प्रैक्टिस ही किए। मेरे को जो पता है, लाइक देयर आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, देन एआई, आर्टिफिशियल, सो ये सबसेट ही है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स एंड ऑल। सो among this which would be best career option? Like आई थिंक मेरा राय pretty much सेम रहेगा। लाइक फर्स्ट ईयर में मैं भी काफी कंफ्यूज था कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहिए, iOS वेब डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग। मैंने काफी सारे ट्राई किए इनफैक्ट, लेकिन मजा आ गया मशीन लर्निंग करने में, तो फिर 1.5 year 2 years वही करता था। so in short you are telling कि फिर you have to try multiple things और जो आपको पसंद आए वही चूज करो, don't run back. एग्जैक्टली। Thanks for coming.